हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। आप लोगों ने एफओसोपी के वीडियोस को देखकर एक चीज तो समझ में आ गया है कि एसएसबी का सिलेबस इज नॉट साइकोलॉजिकल टेस्ट, जीटीओ, पर्सनल इंटरव्यू, टीएटी, डब्ल्यूएटी, फट्टाबल्ली, ये सब नहीं है। ये सब एसएसबी के टेस्टिंग टूल्स है एंड व्हाट इज बीइंग टेस्टेड इज योर पर्सनालिटी। एंड अगर आप इस मॉडल को देखोगे, दिस इज कॉल्ड स्टिमुलस रेस्पॉन्स मॉडल। और मैं एक स्टेटमेंट कहता हूं, बिटवीन द स्टिमुलस एंड द रेस्पॉन्स यू हैव द फ्रीडम ऑफ चॉइस, चुनाव करने की क्षमता। इस फ्रीडम ऑफ चॉइस को ही बोलते हैं डिसीजन मेकिंग स्किल, कि जीवन के हर परिस्थिति में आप उस समय किस प्रकार से निर्णय लेते हो और वो निर्णय आपके भविष्य को निर्धारित करता है। So that freedom of choice is what the SSB wants to test. तो अगर आप stage 1 को देखोगे तो you will see the entire stage 1 process, whether it is OAR, verbal, non-verbal हो गया, PPND का picture story, everything. Actually it is getting processed within you. आंखों से उन इनपुट्स को लेते हो, कानों से ब्रीफिंग सुनते हो और ये दोनों आपके बुद्धि में जाता है और पूरा का पूरा खेल इज बीइंग टेकन, डिसीजन इज बीइंग टेकन इनसाइड यू एंड बाहर एक रेस्पॉन्स आता है उस सिचुएशन का, उस ओयर का रेस्पॉन्स, उस टीएटी पिक्चर का रेस्पॉन्स। सो बिटवीन द स्टिमुलस एंड द रेस्पॉन्स यू हैव द फ्रीडम ऑफ चॉइस। नाउ लुक एट द साइकोलॉजिकल टेस्ट, द टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी एंड एसडी। ये आप ब्रीफिंग कानों से सुनते हो और टीएटी के पिक्चर्स को, डब्ल्यूएटी के वर्ड्स को, एसआरटी के स्टेटमेंट्स को एंड एसडी के क्वेश्चंस को आप आंखों से देखते हो। अंदर जाता है बुद्धि में और बुद्धि में, विचारों में आप उसका रेस्पॉन्स क्रिएट करते हो और उसको बाद पेन से बाहर लिख देते हो। सो देयर आर टू स्टेजेस, वन इज द प्रोसेसिंग दैट हैपेंस विद इन यू एंड सेकेंड इज द एक्सप्रेशन ऑफ दैट आइडिया थ्रू द यूज ऑफ पेन, विच कम्स इन द फॉर्म ऑफ रेस्पॉन्स, जो कि साइकोलॉजिस्ट को मिलता है। फिर साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, उस रेस्पॉन्स को पढ़ता है और वापस प्रोसेस को, कि आपने आपके अंदर आपके विचारों का क्रिएशन कैसे किया, इसको बोलते भी है आप सोचते कैसे हो। सो बिटवीन द स्टिमुलस एंड द रेस्पॉन्स यू हैव द फ्रीडम ऑफ चॉइस। तो आपने देखा अगेन साइकोलॉजिकल टेस्ट में द एम्फेसिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद इन यू। लेट्स टेक द जीटीओ। Now GTO में क्या होता है, the GTO puts you through 9 various tasks in a group and he sees your ability to function in a group. So whether it is GD, GP, PGT, GOR, half group tasks, lecturate, individual obstacle, command task or final group tasks, these tasks are presented to you. ब्रीफिंग कानों से सुनते हो, आंखों से स्ट्रक्चर को देखते हो, जीपी के मॉडल को देखते हो, या whatever, and then based on that something is happening inside you and वो आप लिख के, बोल के या करके बाहर मैनिफेस्ट करते हो। अगेन बिटवीन द स्टिमुलस एंड द रेस्पॉन्स you have a freedom of choice. Stimulus is presented by the psychologist, GTO, and response is given by the candidate. And between these two, you have the freedom of choice, which is called the decision making skill. Now, let's look at the personal interview. पर्सनल इंटरव्यू में बिफोर यू आर कॉल्ड बाय द इंटरव्यू ऑफिसर, ही गोज थ्रू योर PIQ फॉर्म, जो कि आपने ही भरा है। उसके बाद में ही कॉल्स यू इन, व्हाट द रैपो बिल्डिंग इज ओवर, ही आस्क यू द CIQ क्वेश्चन। सो CIQ क्वेश्चन बिकम द स्टिमुलस, it goes inside you through your ears, you look at him through your eyes and then you process inside and then you speak. वहां पे आप वाचा यूज कर रहे हो, लेकिन अगेन स्टिमुलस इज अ CIQ क्वेश्चन, रेस्पॉन्स इज व्हाट यू स्पीक, व्हाट हैपेंस विद इन यू इज व्हाट दे आर इंटरेस्टेड, एंड उसको डिकोड करके वो आपके व्यक्तित्व को देखना चाहते हैं कि वेदर योर पर्सनालिटी मैचेस विद व्हाट दे आर लुकिंग फॉर द आर्म फोर्सेस, पोटेंशियल लीडरशिप ट्रेट्स जो है वो देख रहा है। अगर वो दिखता है तो यू विल गेट रिकमेंडेड बेस्ड ऑन हाउ मच ट्रेनेबल यू आर, एंड अगर वो नहीं दिखता है तो आप उसको बाहर निकल जाओगे। तो इफ यू सी द एंटायर SSB process, stage 1, psychological test, GTO and interview, a different kind of stimulus are presented to you and you are expected to respond. Some places you have to write, some places you have to speak, some places you have to perform. So mansa, vacha, karmana. But the common place from where all these 3 inputs are going is your mind. तो अगर if you can manage the world inside you, you can manage the world outside you. आज हम क्या कर रहे हैं, हम अपने रेस्पॉन्सेस को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टोरी अच्छी हो जाए, बी पॉजिटिव हो जाए, साइक को इम्प्रेस कर दे।
little realizing that whatever we are writing on the outside is a reflection of what is happening inside us. So inside us, I call it the Gangotri, and outside what we do is the Ganga. आप गंगा को साफ नहीं कर सकते अगर आपका गंगोत्री ही प्रदूषित हो. तो मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट्स क्लीन दी गंगोत्री. दैट्स व्हाई आई कीप मेकिंग अ स्टेटमेंट. SML का जो टैगलाइन है, इफ यू कैन मैनेज द वर्ल्ड इनसाइड यू, you can manage the world outside you. Now this is what is the philosophy of training at the AFOSOP. So instead of target oriented training जहाँ पे हम responses को ठीक कर रहे हैं, let's be process oriented. उस मेंटल प्रोसेस को ही ठीक कर दो जहां पे ये पूरा का पूरा स्टिमुलस जो है अंदर प्रोसेसिंग हो रहा है. अगर उसको ठीक कर लिया, गंगोत्री ठीक, और वो गंगोत्री ठीक तो गंगा ठीक. मुझे कमेंट लिख के बताना क्या समझ में आया. आप लोगों ने ये YLC का सिलेबस देखा होगा, यंग लीडरशिप कोर्स जो OTA चेन्नई में होता 2019 में. जनरल बिपिन रावत ने इसको इनॉग्रेट किया था. दिस इज फॉर ट्रेनिंग सोल्जर्स, पोटेंशियल सोल्जर्स जो हाई IQ सोल्जर्स है, उनको सर्विस एंट्री के लिए, जो ACC SL कमीशन ऑल दैट. Now I'll play a video. ये जो highlighted portion है, इसको I'll play it in the video. Please listen to it, and thereafter we'll see that. Please listen to the video. Army to train jawans to become officers. It's part of a strategy to fight officer shortage. The focus of this Young Leaders course, YLC, apart from physical fitness and mental robustness, will be on developing leadership traits and character building, improving communication skills in English and public speaking, learning conflict management and resolution skills, decision making and problem solving skills, and soft skills in basic mannerism and military etiquettes. Okay, so you would have seen it talks about physical fitness, it talks about mental robustness, development of leadership traits, development of English communication skill, development of conflict resolution skill, development of problem solving skill, development of decision making skills, and development of soft skills and military etiquettes. Exactly this is what we are training in the AFOSOP classes, where I say that self-management leadership acts as the foundation, where the foundation is built on your leadership and personality development. Personality के 4 dimension, the physical dimension, the intellectual dimension, the emotional dimension, and the strength of character या value dimension. और जब इनके ऊपर clarity आ जाता है, then the SSB के testing tools. So there are clearly 2 parts of your SSB training. The first and the major part is development of your personality and leadership skills, and second part is understanding the SSB testing tools, that is psychological GTO and interview. Ignoring the first part and focusing only on the second part, which is the conventional coaching model, it is target oriented. ये बड़ा आसान लगता है, but इसमें core जिस चीज को वो टेस्ट कर रहे हैं वो इग्नोर हो जाता है. आई थिंक वी नीड टू टेक बोथ ऑफ देम टुगेदर. सो मुझे फीडबैक में बताना क्या समझ में आया. So इसके लिए you are most welcome to attend the AFOSOP composite batch, which will consist of both the SML and the SSB classes. February का batch is available from 19 February to 2nd March, and इसमें आपको ना सिर्फ SSB के टेस्टिंग टूल्स के ऊपर काम करा जाएगा, जो ये YLC का जो वीडियोस में जो कोर एस्पेक्ट दिखाया, based on the concept of self-management leadership, it will be covered. Since we are going to be 24 hours here, there will be a lot of learning, and the entire training will be based on clarity rather than tips and tricks. Absolutely ruthlessly हम एक वैल्यू बेस्ड ट्रेनिंग में आपको उतारेंगे. आपने वीडियोस में ऑलरेडी देख लिया होगा. एंड इसके लिए आपको रजिस्टर करने के लिए कैन कॉन्टैक्ट मी एट 9090099035. Now those people who join the offline batches 2 weeks ka, besides the 2-week offline batches which is fully residential, you will also get 1 month of additional online subscription with me, where you can continue this training online also, because ये एक बहुत हाईली क्लैरिटी बेस्ड होने के कारण you require a longer engagement. So once you finish with your offline training, you will be associated with me for a longer period of 1 month. So you can register. This is the number I've already told you. इसके अलावा those of you are interested in attending only the GTO portion 1 week, that is also available, जिसमें कि stage 1
and GTO testing complete will be covered. Structure analysis will be there, and Sahas camp mein, right now I'm recording this video from Sahas camp, so GTO ground is also available, so you're most welcome to attend only GTO also in case you have a constraint of leave. It will be for 1 week duration, जहाँ पे stage 1 भी cover किया जाएगा plus GTO, and एक full psychological test भी you will be put through, but discussion यहाँ पे नहीं हो पाएगा because of the constraints of time, but that we can cover it in the online classes में वो हो जाएगा. So again, to register I'll tell you the number 9090099035. So do share it with the friends, and I hope to see you in last number. Thank you, and may God bless you. Thank you very much.